Assalamu alaikum ji, welcome back to another video and welcome back to HMH show. Today we will talk about AdSense versus ad exchange. So I'll tell you the difference between AdX and AdSense because there's a lot of confusion and I got some questions as well in my inbox of Facebook and some comments as well. Okay, AdSense है website पे, तो how can you connect ad exchange and what is the difference and all. So we will talk about few differences here. You can note down maybe, or you can watch my video again and again maybe. AdSense का सबसे पहला काम ये है कि the difference I'll tell you. If you have AdSense on your website, then it's a 68% will go to publisher and 32% will be going to Google. So 68-32 का रेवेन्यू शेयर होगा, जबकि एड एक्सचेंज में इट इज़ 80-20. 80 जाएगा पब्लिशर को एंड 20 जाएगा गूगल को. एडसेंस में मेनली बहुत सारा रेवेन्यू सीपीसी कैंपेन से आ रहा होता है, सीपीसी पे ही चल रही होती है पूरी वेबसाइट, जबकि एड एक्सचेंज पे आपका सीपीएम पे भी बहुत सारी इन्वेंट्री जा रही होती है, सीपीएम से भी रेवेन्यू आ रहा होता है. एडसेंस मेनली फॉर नीश वेबसाइट, स्मॉल पब्लिशर जो बहुत हो, आई मीन मे बी 100K पेज व्यूज और 200K पेज व्यूज, उनके लिए एडसेंस सूटेबल है और एड एक्सचेंज उनके लिए अवेलेबल भी नहीं होता. वंस यू हैव इनफ इन्वेंट्री देन गूगल विल सेंड यू द इनवाइट टू गेट एड एक्सचेंज टू इंटीग्रेट विद योर वेबसाइट. अदरवाइज वो आपको लाइक यू कैन नॉट गेट नॉर्मल अप्रूवल लाइक यू गेट अप्रूवल फॉर द एडसेंस. सो एड एक्सचेंज इट्स फॉर बिग पब्लिशर लाइक न्यूज वेबसाइट्स एंड एडसेंस आपको नीश वेबसाइट, छोटे से वेबसाइट पे भी मिल जाता है. मेन डिफरेंस जो आप लोग हर दूसरे दिन हर चौथे दिन आई सी ऑन डिफरेंट कमेंट्स ऑन फेसबुक, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ दिस, मेरा एडसेंस बैन हो गया. सो एडसेंस बैन होता है, उसकी रेशो ज़्यादा है व्हेन यू प्ले अराउंड विद थिंग्स और एडसेंस बैन हो जाता है. बट एड एक्सचेंज बैन नहीं होता क्योंकि वो आपको एक सर्टन क्राइटेरिया के बाद आपको वो एड एक्सचेंज का अकाउंट मिलता है. उसके बाद जाके आपको इफ़ देर इज़ समथिंग रॉन्ग वो आपको वार्निंग देंगे, आपको पहले बताएंगे, देन मे बी दे विल बैन, बट दैट आर वेरी लेस चांसेस, रेयर चांसेस. बट एडसेंस कैन बी ब्लॉक्ड, यू नो वेरी वेल. ओके, सो ये डिफरेंस हो गया. एंड आई विल टॉक अबाउट वन थिंग मोर दैट आई हैव रिटन डाउन. सो एडसेंस में एक तो एड रिफ्रेश अलाउ नहीं है, मीन्स आपका लेट्स से इनफाइनाइट स्क्रॉल है वेबसाइट पे लगा हुआ लाइक यू नॉर्मली हैव ऑन फेसबुक और वट एवर यू हैव दैट इन योर आर्टिकल पेजेस. यू आर स्क्रॉलिंग डाउन, योर न्यू आर्टिकल इज कमिंग विद द इनफाइनाइट स्क्रॉल, देन एडसेंस विल नॉट वर्क इन दैट रिफ्रेश केस. बट AdX पे ये काम करेगा, आपको रिफ्रेश अलाउ होता है. आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल हियर. सो आप क्लिक इन्फो की वेबसाइट पे जाओगे, आपका ऑटोमेटिक पे रिफ़्रेश हो रहा होता है. अगर वहाँ एडसेंस चलाओगे तो वो अलाउ नहीं करेगा, जबकि वहाँ आपको अलाउ है आपके लाइव स्कोर कार्ड पे. इसी तरह और भी बहुत सारी वेबसाइट होंगी. एंड अनदर द मेजर डिफरेंस इज स्टिकी एड्स. एडसेंस पे स्टिकी एड्स अलाउ नहीं है, जबकि एड एक्सचेंज पे स्टिकी एड्स अलाउ हैं. सो एड एक्सचेंज आपको मिलेगा if you are a big publisher or at least you are crossing like 300 to 500K page views. More than that, then you can contact Google, or maybe Google will contact you. Or if you're having a consistent more than $1,000 revenue from your AdSense, then Google might contact you to integrate your website with Google Ad Exchange. That is another thing. If you don't have Ad Exchange account, still you can integrate with the Google Ad Exchange resellers. सो उसके अंदर काफ़ी सारे ANA है, AdX है, ADOP है और इस तरह के वो एड पुशअप है. सो इस तरह के बहुत सारे हैं जो आपको दे आर रीसेलर ऑफ एड एक्सचेंज. दे विल टेक सर्टेन रेवेन्यू एंड दे विल प्रोवाइड यू इंटीग्रेशन विद द एड एक्सचेंज सो यू कैन इंटीग्रेट योर वेबसाइट. So basically if you are a big website, news website, viral website and your impressions are a lot, your inventory is a lot, then it's the best thing to integrate your website with ad exchange. AdSense में क्या होता है, AdSense में mainly जो आपका ads चल रहे होते हैं, the source of the ads are Google AdWords.
गूगल एडवर्ड्स पे यू नो दैट देयर आर वेरी स्मॉल एडवर्टाइजर आर देयर। अगर आपकी वेबसाइट एड एक्सचेंज के साथ कनेक्टेड है देन द सोर्स ऑफ द एड्स मेनली मोस्टली आर फ्रॉम गूगल बिड मैनेजर, उधर से ज़्यादातर एड सोर्स होके आ रहे होते हैं। तो यस, दीज आर द बेसिक एंड मेजर differences between AdSense and Ad Exchange, and hopefully in next video we'll talk about how can you integrate your website with Ad Exchange practically, how can you do that. So in my last video about GAM, गूगल एड मैनेजर, सो उसके आपके पास उसका अकाउंट होना चाहिए, और आई टोल्ड यू इन दैट वीडियो एज वेल कि वो किस तरह मिलता है. यू शुड वॉच दैट वीडियो एंड मे बी इन नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट हाउ यू कैन इंटीग्रेट योर वेबसाइट विद गूगल एड एक्सचेंज. थैंक यू सो मच. डू सब्सक्राइब. बाय बाय.